All right. So here we go. Now we are going to, talk about one of the very important aspect, which is the key steps to active listening. Wherever we are speaking of communication, while it is in office, in our daily life, or we speak about any of the situation in which in flow of information is involved among two people, three people, a group of people on the road, in car, in your home, in your office, any situation, an restaurant, market, like you name it and have it. There has to be one person who is informing you about something, disseminating kind of an information, and which the other party is absorbing. So for that point of view, listening, which is active listening, is very, very, very important, for us. So the reason why we say that it is the active listening is important, and we have to make it a very we can say effective as a tool of communication, is that whenever there is a flow of information, so you are actually absorbing whatever the message the other person is giving you. So for that, clarity is very important, and for based on that, there are four these points, and there is the fifth key step also involved into it, which I'm going to relate to you. Acha ji. So first of all, what we have to do is to focus on what the person is saying without interrupting. One of the very important thing which is related to our language, when we are talking to somebody, spoken English in particular, it is very important that we know the basic ethics of talking with somebody. So it creates value. It adds it is an added, you can say, quality of our personality, that we are active listener, as well as we are reinforcing whatever the information is been given to us. जैसे आप ये बड़ी simple सी बात है कि whenever there is a meeting going on, you have seen there is a culture at times that we always schedule that meeting in the conference hall, or either in the boardroom, where there is less interruption, totally no interruption, and we make sure Yes, that exactly. it is exactly like that. And even we place the board outside the meeting room, meeting in progress. Reason is that everybody should know that abhi is वक्त तो बात ही नहीं करनी है. There is, has to be a complete pin drop silence. और अंदर जब हम चले जाते हैं in that room, the main thing which we are looking at and we are focusing it, कि even हम ये कोशिश करते हैं कि अपनी chair जो हमने pull करनी है वो भी बड़ा quietly हो. अच्छा, till the time our the boss who has to lead the meeting, आप अगर जा रहे हैं, आपने मीटिंग अपने स्टाफ की रखी है, सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज दैट टिल द टाइम यू आर नॉट देयर, या अगर हम किसी अपने सीईओ की मीटिंग अटेंड करने गए हैं, तो व्हाट डू वी डू दैट वी कीप ऑन chirping. In a way, I used the word of chirping. We keep on, exchanging views with the kind of a fear towards the boss. और ये जो अभी मैं आपको इसका भी बताती हूँ, why I have I talk a lot on this active listening part. We all are talking to each other. ऐसे ही होता है ना. अच्छा, क्या है Yes, वो yes. है तुम्हारे पास? यार वो वाली पे क्या बोलना है, इसका तुमने काम कर लिया था, इस पे क्या है, उसको कोई नई चीज तो नहीं आई, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन इतनी है. This is the preparatory, kind of a which is happening in the communication, which is exchange of ideas, exchange of thoughts is taking place while we are speaking in this kind of a conference, this kind of a meeting. है ना, ऐसे ही हो रहा होता है ना. और क्या होना शुरू होता बिल्कुल ऐसे. है, yeah, like this all process which is actually happening is particularly a good example of active listening, because we all are under the pressure of that meeting which is going to be addressed shortly, and we have to participate from our side. Life is like that. We all are in the boardroom. We all have to take turns, and we all have to be in this kind of a conversation till the time we are focused towards our aim of life, or till the time we are focused on our offices, till the time we are focused either on our home. So these are the boardrooms of our life, actually, where we communicate with each other in separate rooms, in separate situations, and our personality takes over the shape of another personality every time. You are a boss in the office, you are a reporting executive in the office, you are a colleague in the office, you are at times just you can say auditor, to we say that inspecting on that time, on that side is the job role which you have got, or anybody else, HR head, finance controller, anybody, like you name it and have it, bari baat ho jati. So that roles, the different roles you are taking over there. But
there is your real personality is somehow hindered behind that role. Am I right? ऐसे ही होता है ना. अब वो जो बिल्कुल ऐसे ही. आपकी पर्सनालिटी होती है उसमें क्या चल रहा होता है, that you are trying to say words, you are trying to express yourself, but you limit yourself. Why? Two, three reasons. Out of these three or two reasons, one reason is very valid because obviously you are wearing the name tag of that organization, the badge of that organization, and the title of that organization, which you have to, in fact, share with others. तो उसके लिए क्या है कि it's very important that you should be careful because you own it and you have got value for you because you worked for that job, you have earned the respect in that organization, so that is important. But the no, a big no is on your fear. The big no is on the pressure. Out of which, what do? That we mumble. We do not express the right thing at the right time. Am I agree? Do you agree? Yes, I am totally agree with you. That hinders your communication actually, and we say that we cannot speak English, we cannot talk proficiently or confidently with others. Or ye hai. This is truth. Yes, it is right. You are not wrong. It's absolutely the same thing which is actually happening in our life. You Actually, have I don't know. Yeah. I don't know why people use English. We Yes. all are Pakistani. We are communicating with Pakistani, but I don't know why people speak And in English yes, every and time. there is one point which is, and you are very right in that. I agree with you. And particularly in meetings, we do not communicate in English throughout the day. Whenever you are going to his office, he will be talking to you in Urdu. Your boss, your CEO. Am I right? He'll ask Yes, you, क्या हुआ exactly. भाई? I क्या don't हुआ know यार? why. इतना हाँ yes, and he'll question you like that in a very happening tone. क्या हो रहा है यार? बताओ इसका क्या कर लिया है? इसका कुछ हुआ है नहीं हुआ? तुम्हें कितने दिनों से यार बोला, तुम पीछे नहीं लगते, जाओ फिर चेक तो करो. ये अगर टोन तब होगी जब आपकी थोड़ी सी उसके साथ, वरना आपको बुलाएंगे, भाई क्या हो गया आपको, इतना नहीं पता अभी तक, मेरे पास कोई रिजल्ट्स नहीं है मेरी, बिल्कुल यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट. बस इतनी अंग्रेजी वो बोलेगा, इससे ज्यादा वो नहीं बोलेगा. But when he'll be there addressing a meeting, then our English communication starts, and we are the champs of English. And we will be identifying actually that उसने ये mistake की, अंग्रेजी तो बोलनी आती नहीं है, the stuff like that. अब इसको हमने overcome कैसे करना है? इसको हमने overcome ऐसे करना है कि the technique which I am going to share with you, that be an active listener and take notes. ये जो अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ, दिस इज एन एडिशनल कंप्लीटली interpersonal skills course which I do for people, and in that I address this aspect on a wider wavelength. But with you, I have kept, as I told you in the beginning, that with you I'll be keeping chunks of my special programs also. Remember, आपसे मेरी जब बात हो रही थी. So this is what actually I'm doing with you, right? We need to actually go to the baseline of everything. Being a working professional, just spoken English classes will work, but we need to hammer on the basic things also. It is going to add confidence in you automatically, that those shivers will not come, those sweats will not come to you. You'll be sitting relaxed. You remember, you told me in the beginning that the guy with whom you were talking was shivering while he was talking with you. ऐसे ही था ना? क्या था? आपका fear था actually उसको. He was afraid of you because you are in the boss role. और अगर वो कुछ ऐसा कह देगा तो he might would be manipulated, और कोई पता नहीं कल आप उसको बुला के कहें तुम्हें बात तो करनी आती नहीं, और ऐसा होता है. हम इतने बड़े दिल के हैं नहीं ना. और अनफॉर्चुनेटली एशिया पैसिफिक पूरा ही, we I must highlight this, that in Pakistan, India, Bangladesh and countries like we are, तो हमारे साथ ये ज्यादा है. पता नहीं, हमारे दिल बहुत छोटे हैं. हम अगले को हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ नहीं खींचते, हम उसे कहते हैं मेरा हाथ छोड़, हट पीछे, तुम्हारी तो शर्ट गंदी है, मैं भी गंदा लगूंगा. सो व्हाट, अगर उसकी शर्ट गंदी है तो हम उसे हेल्प तो कर सकते हैं 10 रुपए देके कि तुम सर्फ एक्सेल खरीद लो और जाके राम शाम को धो के कल फ्रेश आना, और फिर वो मेरा फखर हो गए, ओ यस आज तो यू आर लुकिंग ऑसम, चलो अब जाओ बॉस के पास ये दे के आओ फाइल, एंड ही विल फील प्राइड. पूरा दिन उसका मुस्कुराते गुजरेगा, और आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैंने ये 10 रुपए का सर्फ इसको लेके दिया है. आपकी खुद की अचीवमेंट होगी. दीज आर दी लिटिल थिंग्स विच वी नीड टू डू. Why I am relating everything with active listening, कि आप उसकी अंदर की आवाज को भी सुने ना. यही तो बात है सारी. अब एक मम्बल करता है शख्स तो हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, ही इज नॉट अ गुड स्पीकर. उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, वर्ड्स नहीं है, तो हम वर्क नहीं करेंगे उस पर. बड़े फखर कसेंगे, यार देखे अंग्रेजी आ गया था मुंह उठा के मीटिंग में पार्टिसिपेट करने, बंदा कुछ देख ही आता है, कोई नोट्स ही ले लेता, मेरे पास आ जाता, बड़ा फखर होता है हमें. लाइक दिस इज द जनरल कल्चर.
Do you agree on that? It happens, right? Yes, I am totally agree with you. सारी चीजें हो रही होती हैं. अब हमने मीटिंग्स को कैसे, ये एक्टिव लिसनिंग मीटिंग में कहाँ से आ गई? अब आपको मैं ट्रिक बताने लगी हूँ. ट्रिक बहुत जबरदस्त ट्रिप, और वो जो इस सारे सिचुएशन को ट्रिप ऑफ करना है ना, वो आप क्या एक अच्छा सा ट्रिक यूज करेंगे, दैट ट्राई टू टेक नोट्स. अब नोट्स कैसे हेल्प करेंगे? अब देखें, यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग विद सीईओ, योर टर्न विल कम मे बी आफ्टर 2-3 minutes. योर प्रेजेंटेशन, यू हैड बीन रोड लर्निंग होल नाइट. एक एक जुमला आपने उसका एक एक लफ्ज याद किया कि अगर स्क्रीन शेयर ना चली या अगर मेरी प्रेजेंटेशन समहाउ उस वक्त ऑफ हो गई, मैं अपने लैपटॉप पे रह गया, तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स बोलने हैं. लेकिन क्योंकि मैं खड़ा हूँ, सबके सामने होऊंगा, तो मुझे आना चाहिए. और अगर मैं उसको बैक एंड से फेस कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे स्क्रीन में क्या चल रहा है मुझे सामने नजर आए. देयर आर मेनी थिंग्स. आई विल डू सम वन persuasive presentation skills class also with you. That will be a netic thing, don't worry. ठीक है ना? अब हम देखें Great. करने क्या जा रहे हैं. हाँ इंशाल्लाह, डोंट वरी. प्रेजेंट पीपीटीज पे भी काम करेंगे थोड़ा. अभी हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर के क्या कर रहे हैं. अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेक डाउन नोट्स. क्यों मैंने ये कहा कि टेक डाउन नोट्स, आप उसी की वोकैबुलरी उसी पे इस्तेमाल करें. गॉट माई पॉइंट? नोट डाउन हिज वर्ड्स. मैं अपने एक्स बॉसेस की पूरी पूरी चीजें मिनट्स की तरह लिखने की आदत है मुझे. जो वो बोल रहे होते थे, लाइक आई हैव बीन वर्किंग विद मल्टीनेशनल्स जिसमें मेरे मोस्टली बॉसेस फॉरेनर्स रहे हैं. अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था उस वक्त, आप बताएं मुझे. यही था ना कि उसकी तो कम्युनिकेशन जो वो बोल रहा है उसका तो एक्सेंट Yes, भी listening. मुझे समझ में नहीं आता. नहीं आएगा ना, बिकॉज उसका क्रेज है. पाकिस्तानी तो एक मतलब थकी सी अंग्रेजी बोलेंगे, मुझे आपको समझ आती है बड़े अच्छे से. कई दफा वो हैवी इंग्लिश लेके आता है, तो फिर हमारा जो है ना बस इधर उधर हो जाते हैं हम. अब आपने वही ट्रिक उसके साथ यूज करनी है. मीटिंग में जाने से पहले आज से आप ये हैबिट बनाएंगे कि आप बेशक उसको गूगल करें. आप अभी हम वैसे आपको ज्यादा इसलिए नहीं रहेगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी गिविंग यू टास्क ऑन द सेम. आई एम एनहांसिंग योर वोकैब बाय सर्चिंग वर्ड्स विच आर यूज्ड इन ऑफिस इन अ कॉमन वे. आप अपने आपका नोटपैड कौन देख रहा है आपके सिवा? कोई भी नहीं. उस पर लिख के लेके कोने में छोटे छोटे वर्ड्स. कोई देखता है तो हाथ रख ले, मोबाइल फोन रख लें, किसको दिखाना है आपने? use that heavy vocab for the person who is going to ask a question from you, and then you see the tendency of asking question towards you. वो नहीं पूछेंगे आपसे. क्यों? क्योंकि जिस जवाब में आप अंग्रेजी दे रहे हैं, अंग्रेजी से अंग्रेजी में आप जवाब दे रहे हैं उसको, वो तो उसके भी ऊपर से गुजर रही है काफी हद तक. एंड यू आर क्रिएटिंग. Yes, I agree. फीलिंग कॉन्फिडेंट आंट यू? जबरदस्त Yes. है ना? Yes, जबरदस्त. it's a very good. आपको कैसी बहन मिल गई है जिसने आपको क्या क्या ट्रिक्स बतानी शुरू कर दी है मजे वाली. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, इम्प्रेस. अब आपका फियर फैक्टर खुद ही कम हो जाएगा. मैं आपको ना इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले भी बताऊंगी, जो मेरे एरियाज हैं उनमें से सब में, कि आपने ऑफिस में अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना होता है इन मीटिंग्स का. और अगर आप ये कहें कि मुझे नहीं होता, तो आप झूठ बोल रहे होंगे. मैं और आप झूठ बोलेंगे. ऐसा होता नहीं है. होना चाहिए, नेचुरल है. अगर नहीं होंगे तो प्रिपेयर नहीं करते आप, फिर कुछ और है. आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है. आपको प्रिपेयर करके जाना है. आपको फियर होना चाहिए. गॉट इट? ये अगर हम कहें कि नहीं मैं बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड जाता हूँ, नहीं, क्यों जाते हैं भैया? आपको क्या ऐसा कि आप फ्री ऑफ माइंड जाते हैं? आप क्या वहां जाके ब्लंडर्स करते हैं? आपको कोई वहां पे जाके पूछता नहीं है कुछ? वाई? दिस इज नॉट अ गुड थिंग. यू शुड बी अफ्रेड, यू शुड बी स्वेटिंग, बट येस, यू शुड गो विद योर बैग carried with right tools to execute over there. And that is your vocab, your tone of voice, your facial expressions, सब चीजें. तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सब पे आऊंगी, वन टॉपिक, वन सिटिंग. Got it? तो ये Even सारी I have started noting down your points also, like हाँ, tendency yes, hinders. You use your yes. in your vocabulary. So I also write My down these words. community. Yes, and you must be noticing that I do not use communication, I use communicate. That's also one of the word which adds value to your own, discussions. Sorry, can you please repeat? Communicate. Communicate, I'll write down in the chat box and you'll get that. Or either I will be sharing with you. It's communicate. Communicate is also a very strong word which adds to all kind of, you can say, communications. It is written as well. It is in the office, in the meetings and all. So communication se zyada better hai communicate use kare. It is more impressive in that term, right? So this is one of the small tip which I was talking to you. Ab kya hoga? Active listening ka part in a meeting is this, that you listen to the first speaker very keenly, very with lot of interest. Keenly इसलिए कि जब आपके अंदर शौक होगा ना किसी चीज को सुनने का, तो आप इस तरह के कान से सुनेंगे जिसपे आप हाथ नहीं रखे होंगे.
बट आप उसको पूरी अटेंशन पे करेंगे। अब उस वक्त ना आप भूल जाएं सारों को जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। अब आप समझे मेरी कम्युनिकेशन मेरे बॉस से चल रही है, एंड कीप लुकिंग एट हिम। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई टेल यू, अनदर जो ट्रिक है ना वो ये है कि ट्राई टू मेक एन आई कॉन्टेक्ट विथ हिम मोस्ट ऑफ द टाइम। अब वो आप उसे कंफ्यूज कर रहे हैं एक्चुअली इस वक्त। गेटिंग माई पॉइंट? यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू फेस हिम unconsciously and making him ready with fear कि ये कुछ बोलेगा अभी। आर यू गेटिंग मी? Yes, I am getting you. राइट। अब आई कांटेक्ट कैसा होगा? घूरना नहीं है बिल्कुल भी, बड़ा एक अच्छा स्माइल के साथ एक आई कांटेक्ट। एंड पता नहीं मुझे एक फीलर है, हालांकि यू टर्न ऑन कैमरा वंस ओनली एंड ट्वाइस, बट आई हैव अ फील दैट यू मस्ट बी अ स्माइलिंग पर्सन ओवरऑल। आप स्माइल करके ही बात करते होंगे, आपके टोन से मुझे अंदाजा होता है। आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई राइट? ऑब्जर्वेशन राइट है ना? Yes, sometimes. Yes, sometimes. समटाइम्स नहीं, नॉर्मल में होता है, इट्स ओके टू गो विद दी हार्श, बिकॉज आपका डिपार्टमेंट ऑडिट है। लेकिन नो वरीज ना, ऑडिट है, कोई आप वो मतलब मौत का फरिश्ता थोड़ी है दूसरे के लिए। आपने उसके साथ दोनों तरह का बैलेंस रखना है ना, स्ट्रेस भी देना और कभी कभी नहीं भी देना। लेकिन वो जैसे पुलिस ऑफिसर भी है तो भी उसका टाइटल बहुत है, एक जनरल है, उस जनरल का टाइटल ही बहुत है उसके लिए कि वो अगले की तो जान निकल जाती है, ये पता होता है। मेरे Actually, जीएम मुझे one point I would like to share. Recently, I made a presentation for the principals, for school principals, that we are not the policemen. Auditors are not the policemen. Auditors are the advisors वाओ, or counselors. Counselors. ग्रेट You can काउंसलर, share with. You can share him. You can ask for the help. या Likewise. ग्रेट। So देख ले, अब मैं पता नहीं मेरे पास कोई मैजिक है, मुझे पता चल जाता है कि आपने क्या किया था पास्ट, है ना? And I spoke, and that's absolutely what we should be doing by practicing it, by making the other person feel that much confident कि वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि ये जो हाइड करने का सिचुएशन है वो रही ना। और हमारे मुल्क के साथ yes, exactly. और हमारे मुल्क के साथ यही अलमिया है कि हम इतना डरा देते हैं सामने वाले को कि वो चाहते हुए भी आपको कुछ नहीं बताएगा। कहेगा यार किस मुसीबत में मैं फंसूं, लेट इट बी द वे इट इज, खुद ही पता चलेगा, या तुम बता देना कब। मैं तो वैसे भी एक महीने में नौकरी छोड़ने वाला हूँ, जो होता है होता रहे। एंड दिस इज वेयर वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ मेस अमंग आवर पीपल। ठीक है जी। सो दिस इज यू नो व्हाट आई वांटेड टू मेक अ पॉइंट बेस्ड ऑन एक्टिव लिसनिंग। इसको हमने कंटिन्यू यहाँ से इंशाल्लाह करना है आगे भी। और मैंने आज इंटेंशनली थोड़ी प्रोलॉन्ग कर लिया सेशन, इसलिए कि हम थोड़ा सा कैच ऑन इसी तरह से अपना जो क्लास आपकी कल की मिस हुई है उसको तो कल की नहीं, सॉरी, वेडनेसडे की एक मिस्ड भी है, उसको कैच ऑन करना है। बट हम मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह से 15-20 मिनट्स करके उसको कैच ऑन करते जाएंगे, ताकि वन डे तो हमारा हो जाए, लेकिन आगे का फिर हमारा स्केड्यूल ना डिस्टर्ब हो इंशाल्लाह। So this is, you know, what that we will discuss after this, but I'll go for that. So these two things I want you to make sure that we have to go with active listening part. Then essential points of repeating them back. Confirm essential points by repeating them back. ये आप दोनों तरह से करेंगे। जब वन ऑन वन कन्वर्जेशन है, कोई मैसेज कन्वे हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप सामने वाले के साथ रिकन्फर्म करेंगे। यू मेंट टू से दिस, डिड यू मीन टू से दिस, प्लीज अनयूज मैजिक वर्ड्स एवरी टाइम। कुछ नहीं होता, मेरे जीएम्स फॉर्नर्स रहे हैं थ्रू आउट माई लाइफ, और वो मेरे ऑसम जीएम्स इसलिए थे कि वो एज ए मेंटो एक्ट करते थे। वो कभी भी मुझे स्ट्रेस नहीं देते थे, मुझे कहते थे yes, yes, very right, if I'm not wrong, this is what you meant, try to speak in that tone। 4-5 दिन 10 दफा 5 दफा कोई आपको जरा स्टेयर करेगा कि यार किसकी नकल करता है, क्या चक्कर है, क्यों है, फिर वो यूज टू हो जाएंगे, अगर नहीं इसने कुछ टोन हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि मैं जिससे अपने लैंग्वेज स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, एंड द पर्सन इज फ्रॉम द अदर लैंग्वेज, तो मैं उसका टोन ऑफ वॉइस और उसका जो एक्सेंट है वो कैरी कर रहा हूँ एक्चुअली अनकॉन्शियसली। अगला आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, अच्छा लैंग्वेज पे काम कर रहे हो तुम अपनी, यार मुझे भी बता दो मैं भी कर लूँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये है क्योंकि हमारे साथ फिर वापस ये है कि आगे बढ़ते हुए को हर कोई चाहता है पीछे खींच लो, उसको इस तरह से गिरा दो कि वो आगे ना जाए, ऐसे सेंटेंस देगा आपको प्रेशर, क्योंकि जॉब इनसिक्योरिटी है ना, आपको आगे तो बढ़ने देना नहीं, फिर भी आपने आगे बढ़ जाना है, आप इधर नहीं तो कहीं और बढ़ जाएंगे। लाइफ खत्म थोड़ी होती है एक दफ्तर पे या एक ऑर्गेनाइजेशन पे। एक बंदे में एबिलिटी और स्किल की कमी कराने की पूरी कोशिश की जाती है ना, आपको स्ट्रेस दिया जाता है कंप्लीट कि आप आगे ना बढ़ जाए। गेटिंग माय पॉइंट ऑन दैट। तो ये सारी चीजें हैं, तो वी हैव टू लिव एंड फाइट विद इट इन अ वेरी नाइस वे।
इस तरह से अगले को आप अच्छा इतना दें कि वो परेशान ही हो जाए आपसे। राइट। फिर आ गया जी, असेस वेदर यू नीड क्लैरिफिकेशन और फर्दर इंफॉर्मेशन। ये बहुत जरूरी है, हेजिटेट ना हो। सीईओ है तो क्या हो गया, दो कान, दो आंखें, एक नाक, फर्क क्या है? स्ट्रक्चर, शक्ल का, डेजिग्नेशन, है तो इंसान ही ना, उसने भी तो सीखा है। उसी वक्त ही एक्सक्यूज मी सॉरी करके जाएं और पूछें तो दिस पॉइंट विच यू सेड, उसकी उस सेक्रेटरी का वेट ना करें। मैं आपको सीधा बताऊं, यू एक्चुअली गिव वैल्यू टू द अदर पीपल इन हिज ऑफिस बाय योर ओन सेल्फ। क्या करेगा वो ज्यादा? बताएं ना मुझे, क्या हो जाएगा अगर आप उसको एक्सक्यूज करके पूछ लेते? तो क्या कहेगा वो? दो चीजें होंगी, अगर वो बहुत ही ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग से माइंड, मतलब नेगेटिव माइंड का बंदा है, तो कहेगा आस्क माय सेक्रेटरी, डोंट यू नोट डाउन। अब आगे से फौरन के, आई एम रियली सॉरी सर, आई विल सर्टनली गो टू हर, बट इफ पॉसिबल कैन आई जस्ट टेक 2 minutes। देखें, बेइज्जती वाला सीन तो, लाइक सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी अक्रॉस द board, whoever will be listening to this as well, and other than that, like it's a general thing, like Pakistan, India, basically these two countries are at the hit by that. By बाहर के मुल्कों में भी होता है। I've been to UK, US, many offices are like that. They speak that way. But take make an excess ना, अब जो होना था तो बोल दिया उसने, let it be। इस बात पे तो नहीं निकालने वो वाला आपको, ना इस बात पे वो आपको कोई वो देगा, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। और इट, सो टेक लेवरेज, बी कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा स्टेप अहेड करें। और पता नहीं, मुझे एक फीलिंग ये भी आती है, शायद आप करते होंगे, आप पूछ लेते होंगे, जितना मुझे अंदाजा होता है, बिकॉज पता नहीं, शायद, लेट्स सी इफ आई एम रॉन्ग और राइट, ये मुझे आप साथ साथ अफर्मेटिव बताएं। ऐसा होता है, मुझे लगता है आप थोड़ा सा स्टेप ले लेते हैं पहले भी। इज इट लाइक दैट? Sometimes, yes, I sometimes repeat words. Yes, Ask him to repeat words. yes, yes. So you can say very nicely, excuse me sir, would you like, अच्छा एक और भी चीज मैं आपको बताऊं, try to ask after the thing is done। कई दफा ये भी बेहतर रहता है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है तो वहीं पे एक्सक्यूज कर लें, सर would you please tell me। और ई कॉल्स पे तो बहुत ही इजी है, यू कैन एनी टाइम टेल देम दैट आई थिंक द वॉइस लैग, वुड यू लाइक टू प्लीज रिपीट, जैसे अभी आपका और मेरा कम्युनिकेशन में होता है। ऑलवेज टेल यू, आई थिंक आई वाज हार्ड ऑफ लिसनिंग ऑन दैट। लेकिन ये कम्युनिकेशन, ये वोकैब यूज करें, sir, I'm really sorry, I think I was hard on listening on that, would you please repeat these words। टोन ऑफ वॉइस नीचे ले, एब्रप्टली क्वेश्चन ना करें, और उसको अच्छे तरीके से उससे पूछें। वो आपको एक नहीं 100 दफा बताएगा खुशी खुशी, क्योंकि उसकी वैल्यू एडिशन हो रही है 15 लोगों के सामने, क्योंकि 16वें आप है और 17वां वो खुद है। Got it? Now respond appropriately and ask any follow-up questions. Yes, अच्छी तरीके से आंसर रिस्पॉन्ड करें उस सवाल को, और फॉलो अप के क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछें और अपने पास बना के रखें। ठीक है जी। सो हमारे की टेक अवेज आज के सेशन में क्या है कि आप जब कोई ब्रीफिंग, कोई मीटिंग, कोई कॉल, टेलीफोन कॉल, ई कॉल, कुछ भी कम्युनिकेशन में है जहाँ पे आप सिटिंग में बैठ सकते हैं, ट्राई टू टेक नोट्स। आपके पास आपके आईपैड होता है, आईपैड में लिखें, कहीं पे भी लिखें, कॉपी में लिखें, नहीं है तो उसको माइंड में इतना ज्यादा फ्रेम रखें कि आपके पास वो वर्ड्स है। अब आपकी बारी आती है तो स्टार्ट यूजिंग द सेम वोकैबुलरी एंड प्रिपेयर बिफोर गोइंग टू दी मीटिंग्स। इसका भी मेरा एक अलग पूरा प्रोग्राम है, वो मैं कभी मीटिंग्स पे भी आपको करवाऊंगी। वो मेरा हार्वर्ड का कोर्स है, वो क्योंकि आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम हार्वर्ड फॉर पर्टिकुलरली हाउ टू एड्रेस मीटिंग्स के कोर्स पे, सो आई डू दैट ऑल्सो। तो वो भी कभी आपके साथ मैं इंशाल्लाह करूंगी। ठीक हो गया जी। Today's thank you so much. So these were the basic things which I wanted to speak today on in particular. ठीक है जी, इसको हमने कर लेना है। और इसके साथ साथ हमने जो एक और चीज देखनी थी वो ये है आज के हमारे इसमें कि आई वांटेड टू डू इनटू, चलो ये हम नेक्स्ट उस पे देखते हैं, साथ बहुत से पॉइंट्स एक साथ निकालने। अच्छा जी, नाउ इज द टाइम ऑफ द टास्क। आपकी टास्क एक्टिविटी विच आई लाइक द मोस्ट। चले जी, अब टास्क पे आ जाते हैं। एंड बिफोर वी कम ऑन द टास्क, आई थिंक वी नीड नॉट टू हैव दैट पार्ट recorded, so I will stop the recording.